Hello and welcome back to the world of mathematics. So we were discussing class 5th chapter 1 place value. In the last video we have discussed about the Indian and the international system of the numerations जहाँ पे हमने डिस्कस करा था how do we place a number according to the Indian system और हम international system में कैसे number place up करते हैं. Today we are going to do some questions relating to that. So question number 1 is rewrite using figures. We have given first part 10 people have about 1 million hairs in all. तो हमें इसे figures में convert करना है. So how we will be converting it into figures? It will be हम किस first हम identify करेंगे कि हम इस sentence में किस चीज़ को figure में लिख सकते हैं. 10 people we can write 10 in figures and then 1 million hairs. So we can write 1 million. So 10 people have about 1 million. So आपको बताया गया था 1 million that is 1, 0 sorry it is 000 hairs in all. So हमने क्या करा 1 million को हमने figures में convert कर दिया and 10 को right. Again there is the moon is about 356,400 kilometers from the earth. So हम इसको figures में कैसे convert करेंगे. The moon is about 356,400 kilometers from the earth. So 356,000 periods के अंदर आ रहा है तो हमने 1000 periods में डाल दिया and 400 that is in ones periods में डाल दिया. इन दोनों को segregate करने के लिए we will use commas. हम commas लगाना नहीं भूलेंगे because ये हमारे अगर हम भूल गए तो हमारे marks भी भूल जाएंगे. That means cut हो जाएंगे. Okay. Let's move on to the next question. Next question is insert the commas and rewrite in words according to the international system. We are going to write in international system. तो कौन सा system मांगा गया question में ये ध्यान से पढ़िएगा. First question is 712801. First of all commas लगाएंगे. So it will be ones, tens, hundred, comma, 1000, 10,000, 100,000. So how we are going to write? It will be 712,000. ये हमारा 1000 पीरियड हो गया. So 1000 पीरियड्स को हम सेग्रीगेट करेंगे किससे? कॉमा से. 1000 comma then 800 801. So this is how we are going to write it in international system. एक और एग्जांपल देखते हैं 1016800. तो अब हम इसे कैसे इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमास पुट करेंगे दैट इज वंस, टेंस, 100, कॉमा, 1000, 10,000, 100,000, कॉमा. ओके. तो अब इट विल बी 1,000,000 16,000 comma 800. So commas लगाएंगे according to the periods and the places
and your home task will be you have to do question number 1 and question number 2, all the parts of exercise 1C in your notebooks. आपके जो भी डाउट्स होंगे that will be taken up during the online sessions. Do comment your doubts in the comments below so that I can make the list of your doubts. Till then, stay safe, stay healthy, and all the best.